Hello, everyone. Vikram over here from Prabhudas Leeladhar. Good morning, everyone. We will start in 5 minutes from now. Is my voice audible? Vikram, can you hear my voice? Yeah, Vikas, we can hear you. So Okay. we'll start in 5 minutes. Yeah, Yeah, we'll start in 5 minutes. We expect some more people to join in. We yeah. have Okay, now 21 people. okay. Hello, everyone. Vikas, I'm audible.
Yes, yes, you're audible. Yeah. Hello, Should everyone. we I'm start? Vikram Kasat from. Yeah, we'll start. So, welcome everyone to this PL Prime event. Uh, you will be joined by our different speakers and experts during the day, where we will be talking about our products and offerings. Today, our first session is going to be conducted by our head of advisory, Mr. Vikram Kasat, right? And once his presentation is over, we'll request you to put all your questions in the chat box, which we can then take up one by one. Vikram, over to you. Hello, everyone. Thank you, Vikas. I'm Vikram Kasat. I head advisory at Prabhudas Leeladhar. I'm really sorry I got bad cold yesterday, and my voice and I've been a little feverish also. But quickly, we will go what exactly happened in 2024, since it's the last 2 days of the 2024. और आगे 2025 में how to look things, which sector to pick up, and what would be the best bets for here on. We'll discuss that things. So, number one to start with, like as we been NU to 2024, uh, Nifty has re-ended 10% this year, and Sensex almost 9.5%. So it was been a volatile market, and means because यहाँ पे Indian elections थे, there was a geopolitical tensions, there was a new regime in the US, and there was Q2 earning seasons जो था इंडिया का वो बहुत ही weak था. So there were many reasons in the market जहाँ पे ये volatility थी, और plus एक downfall आया. और ये downfall आने के जो major reason there was कि there was no government spending at all from last 2 quarters, since there were two major elections. One was Maharashtra and one was Haryana. Both did well, but the government tap has not started yet. The visibility was seen in last 2 weeks, wherein some defense orders, some spending are being started. So that's the major reason. Apart from that, the Q2 earnings season was also not good. The only thing best in the last like 6 months to 8 months was the domestic inflows. The mutual fund investors, the SIP book, which has arrested FIS too long, like since the selling of the FIS is almost at the peak now, and even though in the Christmas season when the FIS are always almost our holiday, but still we are seeing a 2,000 plus crore selling in a single day. So this has been got arrested because of the domestic flows. So this year was a bottom-up stock picking approach, which has rewarded investors substantially in 2024. Notably, we are entering into 2025, and we have interesting 45 days ahead with the much awaited Q3 earnings season. And this is coming post Diwali, Christmas, and the robust wedding season. Please make it to a point. When we are entering this earnings season, there was Diwali, Christmas, and the best ever wedding season in India. Also, the new regime will be taking office in the US. Trump will be entering into the US with the new regime, and the upcoming RBI policy and the union budget. So these are the main things coming into the foray in 2025. So our thought process is very simple. In 20, the 10% which re-ended in 2024 should gather up in 2025. So normally, जनरली अपन ऐसा देखते हैं कि एक क्वार्टर सीजन खराब होने के बाद नेक्स्ट सीजन में कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से एक विजिबिलिटी आती है कि अगले 3-4 क्वार्टर्स अच्छे जाएंगे. सो दैट कुड बी सीन इन दिस Q3 earning season, and we feel that 2025 will enter the similar like 10% plus returns kind of in Nifty. But about that, whatever incremental returns which we are thinking looks challenging from a headline perspective as of now. So there will be continue to be
like multiple lucrative stock picking opportunities. This will be the market to be looked for stock picking opportunities in 2025 rather than catching up the momentum and being in the Nifty index long side. So our focus and our thought process is that to focus on the bottom up approach in 2025 and go as per the result season, which are the best results given by the companies where the margins are good, and we will have to focus only on the margins in this 2025. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था कि वेन एवर वी यूज टू सी द रिजल्ट वी सी द टॉप लाइन, अगर हाँ धंधा अच्छा कर रहा है, 100 करोड़ से 200 करोड़ गया, वॉल्यूम ऊपर हो गया, तो अपन वी वुड बी हैव बीन अ गुड अप्रोच. बट दिस ईयर इन 2025 the problem is we'll have to take care of the margins. We'll have to see where is the EBITDA margin going on. If the EBITDA margin is going on from 12 to 15%, yes, we will have to think of that stock. So I'm again saying this 2025 would be clearly a stock picking opportunity approach. It won't be a momentum index kind of a play. Investors would have to come into a point that this is not a market where anything you can buy and anything you can sell. It will be a stock picking market. Yes, of course, we are seeing that Nifty will come to a new high maybe in March or May maximum in 2025. But the stock picking would be important. So some of the stocks which I would like to discuss over here will go into top three bets kind of ideas. So we can discuss over here, and it would be a fruitful session for everyone. So one of the stock which we have recently done a fundraise also, and the stocks is like we are getting the stock below the preferential price. The stock name is Suyok Telematics. So recently they have done a fundraise. The market cap is somewhere around 1950 crores. Suyok Telematics. This is one of the high conviction stock, and I will just quickly run you what exactly Suyok Telematics do and why we feel that the stock has a potential to meet the target of 3,460. The current market price of Suyok Telematics is somewhere around 1,850. So clear doubler kind of a stock. So Suyok Telematics, they provide passive telecom infrastructure, towers and optic fiber connectivity to mobile service operators like Airtel, Jio, Vi, etc. They are across 26 states and UTs in India on a long-term lease through MSA, that is called Master Service Agreements. So Suyog in FY24, Suyog clocked revenue of 167 crore, which was 16% year-on-year growth. EBITDA was 117 crore, which is 70% margin, and PAT of 63 crore. The revenue जो सुयोग को आता है, it is generated through IPP fees with a 2.5% escalation over the year and the loading charges. तो अब ये सुयोग telematics, I will just name it at STL. So STL has a portfolio of around 4,360 towers with 5,144 tenancies, and of this 3,818 are small cell tenancies. ये सब आपका Q1 FY25 का STL का एक पोर्टफोलियो है, एंड द बिगेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर जो है वो एयरटेल है, एंड 49.5% कंट्रीब्यूशन आता है जियो से, और वोडाफोन से 26% और 0.4% फ्रॉम BSNL. तो अभी हमने क्यों सुयोग टेलीमेटिक्स को पकड़ा, बिकॉज एक सुयोग टेलीमेटिक्स टावर पोर्टफोलियो ने एक एग्रीमेंट साइन किया है which they will expand exponentially with BSNL or MTNL or VI. And BSNL has a very aggressive plan which they are going on.
And both the telecom companies, they are looking to catch up with their four peers in 4G network, both VI and BSNL, which will more than double, triple Suyok ka tower portfolio over FY 25-26. So Suyog will be adding 3,000 plus macro towers cumulatively for Vodafone and BSNL, जिसमें से 500 plus towers in Mumbai for MTNL and in excess of 1,000 small cell towers. So ये जो टावर एडिशन होता है, ये सेम टावर एडिशन FY 26 में भी होगा. So currently they have about 5,000 tower addition in total from BSNL and Vodafone. जैसे मैंने आपको बताया कि वोडाफोन और बीएसएनएल का एग्रेसिव इक्विपमेंट ऑर्डरिंग रहेगा और टावर एडिशन रहेगा थ्रू गवर्नमेंट बैकिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. देयर इज गोइंग टू बी 5,000 टावर एडिशन ईच ईयर इन FY 25 एंड 2026. तो ये डेटा क्या बोलता है कि सुयोग विल रिक्वायर अबाउट 800 करोड़ ऑफ केपेक्स टू मीट दिस टावर एडिशनल एज स्मॉल कॉल टावर्स रिक्वायर केपेक्स ऑफ 10 लाख ईच. एक जो छोटा टावर होता है उसको 10 लाख रुपए लगता है. रूफ टावर जो होता है उसको 12 लाख रुपए लगता है. और जो मैक्रो टावर होता है उसको 15 से 18 लाख रुपए लगता है. तो जब ये ऑर्डर आएगा तो ऑफ कोर्स सुयोग वाले को पैसा रेस करना पड़ेगा. जो बट अभी जो पैसा रेस किया है वो पैसा अभी FY 25 में यूज होएगा. So the growth will be supported by expanding tenancy portfolio, strategic capital expenditure. Company is projecting an EBITDA margin of 70 to 75%. जैसे मैंने बताया आपको, जो EBITDA margin अच्छा देगा वो कंपनी अपने को देखना है. So Suyog Telematics is one of that, and it will reflect the profitability of its core operations as new tenancies will be added. सो हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू इन FY 25, 26, 27. जो रेंज जाएगा वो 212 से 361 और वहां से 515. और जो हम पैट देख रहे हैं FY 25, 26 और 27, वो देख रहे हैं 84 से 119 से 183. और जो ईपीएस जो देखते हैं अर्निंग पर शेयर FY 25, 26, 27 का, वो देख रहे हैं हम 79, 111, 172. अगर मैं इसको 20 का भी मल्टीपल दूं तो टारगेट प्राइस मेरा 3460 आता है. सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक विच एवरीवन should have in their portfolio with a minimum 7 to 8% of the portfolio allocation. So that is one stock which I wanted to highlight. Other is आपके गुजरात का ही है, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड. सो जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एनटीपीसी ग्रीन का एक आईपीओ आया. हाँ, और बाद में स्टॉक एक स्पीड से निकला. सो उसी तरीके से उसी सेम बिजनेस में देर इज गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, जिसका मार्केट कैप है 3,500 करोड़ और जिसका भाव है अभी 230 रुपए. सो इसमें क्या हुआ है कि गुजरात इंडस्ट्रियल पावर ने उनका पावर कैपेसिटी डबल किया है फ्रॉम 1185 मेगावाट टू 2300 मेगावाट. So by setting up 1100 megawatt of solar power plant in Gujarat, all the orders, land evacuation, infra, PPAs are already in place and commissioning will start in next 6 months. ये जो पूरा जितना करना था केपेक्स एक्सपांशन वो सब कुछ हो चुका है और कमीशनिंग स्टार्ट हो जाएगा अभी 3 से 6 महीने में. The net cash balance sheet capacity doubling, we expect significant re-rating in the stock. स्टॉक जो है अभी करंटली ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के बुक वैल्यू है उसका 223 और भाव है 230. तो आपको ये स्टॉक मिल रहा है बुक वैल्यू के 1.05 FY 25 पीबी पे. जबकि उसके जितने भी पीयर है जीआईपीसीएल के, वो सब ट्रेड कर रहे हैं 2 से 3x FY 26 पे. सो द थॉट प्रोसेस इज the total capex including the park development cost versus the earlier expectation,
जो पहले था वो 5,000 करोड़ का था और एक्सपेक्टेशन 6,000 करोड़ का था। और क्योंकि क्या हुआ है कि मॉड्यूल के प्राइसेस इतने घट गए, तो वो केपेक्स जो 6,000 करोड़ का सोच रहे थे वो 5,000 करोड़ का हुआ। और ऑल पीपीएस आर साइंड एंड अप्रूव्ड बाय जीआरसी एट 2.73। सो हमने जब कंपनी से बात किया तो कंपनी ने गाइड किया है कि 60 lakhs पर मेगावाट एज एबिटा, with total EBITDA expected to be 700 crore from new capacity. सो जब इनका नया सूरत में नया 75 मेगावाट सोलर प्लांट कमीशन होएगा बाय मार्च 2025, द FY25 EBITDA विल बी 400 करोड़, 26 का 800 करोड़ और FY27 का 1100 करोड़। तो आप 5 जर्नी देख सकते हो एबिटा का। FY25 400, 26 800, 27 1100। और ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है एट 10x EV बाय एबिटा। द पोटेंशियल EV विल बी 11,000 करोड़, वेलिंग ऑपरेशनल कैपेसिटी एट 5 करोड़ पर मेगावाट। सो दिस इज द कंपनी विच हैज द पोटेंशियल टू डबल इन अ ईयर। और मैं आपको जो भी स्टॉक बता रहा हूं अभी, वो नॉट अ 10%, 20%, 30% टेक्निकल कॉल, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं। द स्टॉक विच हैज द पोटेंशियल टू ग्रो 2x मिनिमम इन अ ईयर, उसमें से एक आता है गुजरात इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड। दूसरा आपको मैंने डिस्कस किया सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। और एक थर्ड स्टॉक अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं विच इज केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। ये आपका एसएमई सेगमेंट में है, बट स्टॉक अभी मिल रहा है आपको 550 के लेवल पे। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग 530 का भाव है और 530, और मार्केट कैप है 2,650। बट ये स्टॉक का पोटेंशियल बेयर मिनिमम 2,000 जाने जितना लगता है। 2,000 टारगेट प्राइस, 530 अभी करंट मार्केट प्राइस है। एक 3 से 4 गुना हो सकता है ये स्टॉक। तो थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड ये क्या करता है? ये मैन्युफैक्चर करता है फैब्रिकेटेड और गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट लाइक ट्रांसमिशन टावर, आइसोलेटर डिवीजन और अदर प्रोडक्ट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी में लगते हैं पावर सेक्टर स्पेस में। सो ये केपी ग्रुप जो फारूक पटेल का कंपनी है, उनका एक पार्ट है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग। द वो जो कंपनी है ये प्लान कर रही है नया फैसिलिटी लगाने का 174 करोड़ का गुजरात में। जो नया कैपेसिटी है वो सॉरी जो नया फैसिलिटी है उसका कैपेसिटी रहेगा 2,94,000 MTPA एंड 90,000 MTPA हॉट डिप गैल्वेनिक प्लांट, which is substantial increase from its capacity of 53,000 in FY24, an addition of 53,500 MTA in last 6 months from April to September 2024. ये जो 2,94,000 MTPA है, it is expected to commence partial operation in H1 FY26 और to reach optimum capacity utilization by H2 FY26। ये प्रमोटर जो है फारूक पटेल केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग एनर्जी और केपी एनर्जी का, ये बहुत फेमस है, विच डील्स इन सोलर एंड हाइब्रिड आईपीपी एंड सीपीपी बिजनेस एंड इट्स मेंटेनेंस। सो ग्रोथ ड्राइवर क्या होगा यहाँ से? द पावर ग्रिड केपेक्स आएगा समवेयर अराउंड FY25, 26, 27 में 50,000 करोड़ तक के, एंड 50% ऑफ टीबीसीबी शेयर जो होता है ट्रांसमिशन केपेक्स में, which HVDC potential of three big orders along with transmission setting up and the potential in solar and wind projects। तो ये सारा जो बिजनेस है, they will enable a transmission capex even for smaller projects in solar, wind, and this has to be connected to the grid। So ये जो पावर ग्रिड का जो capex है, this gives clear clarity that the products it is manufacturing in for sunrise sector and प्रोमोटर खुद कैन कंज्यूम अ पार्ट ऑफ कैपेसिटी फॉर इट्स अदर कंपनीज। जो उसकी दूसरी कंपनीज है ग्रुप में, केपी ग्रुप में, वो भी कंज्यूम कर सकता है। अभी क्विकली आ जाते हैं इसके करंट ऑर्डर बुक पे, विच इज 450 करोड़, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन H2 FY25। और कंपनी ने जो गाइडलाइन दिया है, वो गाइडलाइन दिया है 2,000 करोड़ का।
which is outside of KP Group orders. और 1,000 करोड़ का expected है to come in from KP Group due to execution of 1.3 gigawatt IPP in KPI Green Energy and wind orders in KP Energy. So around 25% of IPP, CPP, wind execution in products which KP Green Engineering is to supply. So आप सोचिए कि एक 450 करोड़ ऑर्डर बुक जो करंट है वो जा रहा है 2,000 से 3,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे. सो अभी स्टॉक मिल रहा है एसएमई में और मार्जिन है उसका 15%, पैट मार्जिन है 10%. दिस मार्जिन कैन गो अप बाय 1-2% ड्यू टू फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स. सो अज्यूमिंग अ मल्टीपल ऑफ 40x, अगर अपन इसको सोच के चले तो ये रेवेन्यू FY 25, 26, 27 जो ट्रेजेक्ट्री है, बिकॉज इसका कैपेसिटी 8x हो रहा है 2 साल में. तो अगर अपन ये ट्रेजेक्ट्री देखें तो ये ट्रेजेक्ट्री जाएगा 690 करोड़ से 3,500 करोड़ के रेवेन्यू पे, जिसका पैट जाएगा 70 करोड़ से 380 करोड़ तक के, और ईपीएस जाएगा 14.6 से 77 तक के. सो अगर अपन अज्यूम करें 40x, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिजनेस इन कैपिटल गुड्स है, सो दिस पेस गिव्स अस अ टारगेट ऑफ, अगर अपन FY 27 का नंबर लेके चले ईपीएस का तो 77 होता है. तो 77 इंटू 40 करे तो 3,000 का भाव होता है. तो जिसका आज भाव 530 है, आप रिटर्न पोटेंशियल 500% समझ के चलिए FY 27 एंड तक के. So these are the three stocks which I wanted to discuss very clearly. One is Suyog Telematics, one is Gujarat Industrial Power Limited, and one is KP Green Engineering. Now we will come quickly on the outlook of which sector which have the potential to earn more, and which will be seen as the next sector where potentially good money to be made. The sector is defense sector. और आप ऐसा समझ लीजिए कि this is one of the sector which will give the same returns like the solar sector which I have given in last 2 years. इसका मैं एक कारण आपको बता देता हूँ. पहला कारण यह है कि इंडिया एक 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करता है, तो जिसमें उसका डिफेंस सबसे स्ट्रांग रहना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द थिंग. सेकेंड इज द वॉर इन यूरोप has completely shifted the way we look at the defense in our continent. हमारा वो थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है जिस तरह से डिफेंस एक सेक्टर को देखना चाहिए. एंड वी एक्सपेक्ट फायरवर्क्स इन Q4, जो ये फोर्थ क्वार्टर आएगा जनवरी मार्च में, बिकॉज ऑफ इंडिजिनाइजेशन अप होगा. सो देयर विल बी एक्सपेक्टेड फायरवर्क्स इन Q4. कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग टू जंप मल्टीफोल्ड इन नेक्स्ट 2 to 3 years. जैसे मैंने आपको कारण बताया, डिफेंस वुड बी इन फोकस. In-house R&D initiatives will be bolstered by DRDO collaboration. Favorable government policies prioritizing local manufacturing, strategic partnership and import restrictions. अभी कैसा होता था कि बहुत चीजें इंपोर्ट होती थी, अभी गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्शन लेके आएगा और इंटरनली बनाने को बोलेगा. सो ये सेक्टर में देयर इज वन क्लियर कट स्टॉक which we will come with a report in next 4 to 5 days. The stock name is DCX India, DCX Systems. आप ये एक सेक्टर में ये स्टॉक को एकदम ध्यान में रखिए, विच कैन गिव अ मल्टीफोल्ड रिटर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक यूनिमेक करके एक कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है डिफेंस स्पेस में, डिफेंस एंड एरोस्पेस टूलिंग में, विच इज अ वंडरफुल कंपनी. अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी उसका 70% है, बट अगर आपको 50% हाई पे भी मिले आईपीओ में लिस्टिंग डे पे, तो ये यूनिमेक को लेना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. बट इससे रिगार्डिंग जो दूसरी कंपनीज है, वन ऑफ देम इज टेकेरा इंजीनियरिंग. ये नाम आप प्लीज याद से लिख के रखिए. वी विल श्योरली रिविजिट इट. एंड कंपनी बहुत छोटा है, 330 करोड़ का मार्केट कैप है, 201 का भाव है. बट ये मुझे लगता है 201 का 600 बहुत जल्दी हो जाएगा.
इसका सेम बिजनेस यूनिमेक जैसा है। यूनिमेक आज 4,000 करोड़ के आईपीओ पे आ रहा है, ये 330 करोड़ के मार्केट कैप पे अपने को मिल रहा है। द नेम इज टेकेरा इंजीनियरिंग। सो दिस ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू ग्रो somewhere around 2 to 3x. So in the same space, जो भी कंपनीज एचएएल और बीएल को माल बना के देती है, दैट कंपनी विल ग्रो मल्टीफोल्ड फ्रॉम हियर ऑन। दैट इज आवर थॉट प्रोसेस। सो आप ऊपर में, अगर किसी को कुछ लाइक इतना छोटा मार्केट कैप पसंद नहीं है, तो ऊपर में बीएल और एचएएल और मासगांव डॉक भी ले सकते हैं। बट माय थॉट प्रोसेस इज कि डीसीएक्स इंडिया और टेकेरा इंजीनियरिंग, ये दोनों में बड़ा पैसा बन जाएगा। द लास्ट विच आई वांटेड टू डिस्कस इज प्रेसिशन इंजीनियरिंग। हमने गाला प्रेसिशन इंजीनियरिंग का आईपीओ किया था, जो ऑलमोस्ट हमारा 3x हो गया है, बट लिस्टिंग के बाद में। बट आप देखिए कि वो सेक्टर एकदम अभी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा करेगा। सो इसमें कुछ कंपनीज है, थोड़ा बहुत ये टेकेरा इंजीनियरिंग भी उसमें आ जाता है बिकॉज ऑफ दैट टूलिंग एंड प्रिसिशन। सॉरी। सो कुछ थीम है प्रेसिशन इंजीनियरिंग स्टॉक्स के, और उसके कुछ बेनिफिशरीज है जिसमें ज्योति सीएनसी है, आजाद इंजीनियरिंग है, और खुद गाला खुद है। सो आई थॉट टू शेयर यू दिस विथ। सो आप गाला ये लेवल पे भी थोड़ा ले सकते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कभी भी आया तो यू कैन गो इनटू गाला टू। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, and we'll surely discuss much in detail. Today I'm not keeping well, so I'm really sorry for that because of my voice and all. But I am open to the questions now. Please send on the chat box so I can go through and read it. सो जैसे पहला क्वेश्चन है जेंटेक के ऊपर। सो जेंटेक भी एक स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्टॉक ऊपर अभी 2600 से थोड़ा करेक्शन आया है 2400 तक के। बट आई फील समवेयर अराउंड 2300 लेवल तक के इसको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। एंड आई द कंपनी एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और एक अच्छा क्वार्टर देगा। और प्रॉफिट ग्रोथ इसका 55-50% के केगार पे रहता है लास्ट 5 साल में। सो यस, दिस कैन गिव गुड रिटर्न फ्रॉम ईयर ऑन। सो आपने पहले 3 कंपनी के नाम पूछे हैं, तो मैं वापस से आपको नाम बता दूंगा। एक है सुयोग टेलीमेटिक्स, एक है गुजरात इंडस्ट्रियल पावर जो अपन ने डिस्कस किया, एक है केपी ग्रीन इंजीनियरिंग थर्ड जो अपन ने डिस्कस किया, फोर्थ अपन डीसीएक्स इंडिया पे थोड़ा बात किए, फिफ्थ गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग पे बात किए, सिक्स्थ टेकेरा इंजीनियरिंग। ये सारे स्टॉक्स अपन ने आज डिस्कस किए। टाटा मोटर्स एक चाइना के सेल्स और जगुआर सेल्स के कारण अच्छा नीचे आया, बट टाटा मोटर्स हैज ऑल द पोटेंशियल टू रन 10 to 15% soon from the current market price. Okay, Vikas, like let's start with the Amit's presentation. Okay. Thank you, Vikram. Despite your health, you have given a very good view of the opportunities in the market, and I'm sure that everybody in this audience would have noted the stocks, Suyog, and all other stocks which you have mentioned, KP Green, and also Tech Era, and the upcoming Unimac IPO. So I'm sure all of the people will take benefit of the stocks which Vikram has shown. If there are any questions that remain, you can pass it on to us. We will ask Vikram and come back. Now, for the next speaker is Mr. Amit Holani, who will take you through our AI product. So, Amit, over to you.
Yeah. Thanks, Vikas. Thanks, Vikram. Hello, everyone. On a Saturday morning, market काफी choppy, I know, but we have got a good team list. I can see around 35 people over on the call right now. I've been told I should mix Hindi and English, so मैं दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा, so that we can take it very smoothly. Let me go into the presentation first directly, and उसके बाद I'll be more than happy to take any questions from you. Right? So I'd like to share my screen. Okay. Because I hope my screen is visible and I'm audible. Yes, yes, yes. Okay, thank you. So, good morning everyone. जैसे कि आप जानते हैं हमने आप में से कुछ लोगों तक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, but for the people who are new on this call, I like to highlight them. It's all about our Investor AI basket, which is exclusive with Prabhudas Leeladhar है. ये आपको मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिलेगा. So our company name is Bridgeweave. हम लोग एक UK based firm है. इंडिया में we are well known by the name Investor AI, right? So talking about our promoters and how about what is our goal, about what is our motive, why are we in the market. See, हमारा goal क्या है? We want to democratize investment using advanced technology in a very affordable and very convenient way, so that each and every individual masses में हम लोग जा सके. So we are B2B. We are working with our exclusive partners, and that is how our goal is to democratize. Today, what we are going to speak is about our hero product, which is called Alpha Insight. Right? हम लोग इसको हीरो प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा. राइट, लेट्स कम इनटू द प्रेजेंटेशन. फॉरवर्ड. हमारे फाउंडर्स की बात करें तो यस, इट्स ए यूके बेस्ड कंपनी, राइट. सो अक्षय भार्गव एंड ब्रूस आर बेस्ड आउट ऑफ यूके. Sarthak Behura is based out of Hyderabad. They have got varied experience in so many companies, and their collective experience is more than 100 years, right? हमारी बात करें, तनु सिंह इज आर सीआरओ. शी इज एन आईएमएम अहमदाबाद पास आउट. आई एम अमित फुलानी. मैं मार्केट में करीब 22 साल से हूँ, राइट. आते हैं हमारी मॉडल कैसे वर्क करती है. सो वी प्राउडली से दैट वी हैव डेवलप्ड दिस मॉडल इन हाउस आफ्टर रिगरस वर्क ऑफ सो मेनी इयर्स. अभी मॉडल वर्क कैसे करता है? बेसिकली इट्स ए कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी. अगर मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आप सभी ने एक बड़ी कंपनी का नाम सुना हुआ है, राइट? टेस्ला. सो टेस्ला एक यूएस की कंपनी है जो सेम कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज करती है अपनी सेल्फ ड्रिवन कार्स के लिए, राइट. वी आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री जो यही कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी यूज करती है इंडियन मार्केट्स में फॉर स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक पिकिंग, राइट. सो वी आर द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री. हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हमारा ये प्रोप्राइटरी मॉडल है जो हमने बनाया हुआ है. हमारी लैब्स और सर्वर्स वगैरह हमारे सारे हैदराबाद में बेस्ड हैं. हम लोग रॉ डेटा ब्लूमबर्ग से लेते हैं, हमारी सिस्टम्स में फीड करते हैं. जेनेटिक एल्गोरिदम से हम लोग सेलेक्टिव फीचर से आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न्स एंड सेलेक्ट करते हैं. वी कन्वर्ट डाटा इनटू ग्रे स्केल मैट्रिक्स. जैसे अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, एक कैट एक डॉग है, अगर मैं उसका पिक्चर जंबल कर दूं तो आप पहचान नहीं पाओगे, बट कंप्यूटर कैन विजुअलाइज दैट based on so many parameters, more than 1064 parameters. We work on a random basis, and we come out with the best of जो आपके लिए नेक्स्ट 15 दिन, 1 महीना और 2 महीने के लिए बेस्ट हो सकता है, राइट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो हाउ डज एआई इन्वेस्टिंग वर्क? आपके लिए एआई इन्वेस्टिंग क्यों अच्छा है, राइट? सो बेसिकली जैसे ही आपके दिमाग में आता है एआई, एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो हम लोग इसमें यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन पावर, राइट. तो ये हमको कैसे बेनिफिट करेगा? अगर हम लोग ये आज बास्केट नहीं ले रहे हैं या इसको हम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग अपना इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं हुआ है? ट्रेडिशनली हम लोग अपने ब्रोकर से पूछते हैं कि भाई क्या लेना है, क्या बेचना है, या हमारे फ्रेंड को या फैमिलीज में पूछते हैं. The another way of doing it in a better way is so going through the AI model. See, AI इंडिया में नया है, but India is going to be the future. आगे future AI ही रहने वाला है, right? So this is something very powerful tool. What you can use it. So what you can do is direct investing आप कभी नहीं छोड़ोगे. Direct equity investing you can continue with yourself. Mutual fund PMS you can continue with whatever you're doing. Some part of the money you can dedicate to AI and the machine, so that over a period of 1 year जो भी best return आता है वो आपका होगा,
राइट? सो जैसे ही एआई आता है हम एआई यूज क्यों ले रहे हैं और एआई का हम लोग सब्सक्राइब क्यों करें, राइट? सो सबसे पहली बात आती है, इट हैज नो बायस, राइट? आज अगर हम लोग कोई एनालिस्ट से पूछते हैं या किसी से भी पूछते हैं, आप लोग सब एग्री करोगे इसमें कहीं ना कहीं उसका बायस आ जाता है, राइट? कई को प्रमोटर को जानता होगा या फिर कोई कंपनी के कोई चीज में जाके आया होगा। सो एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये कंपनी तो अच्छी है, भले उसका 2 3 4 क्वार्टर भी आगे खराब हो, बट अपने को लगता है कंपनी बहुत अच्छी है। सो ये बायसेस नहीं आता है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ, राइट? सो नंबर वन, रिड्यूसेस बायसेस व्हिच हेल्प्स यू इन एनहांसिंग योर रिटर्न्स। सेकंड इज मोर कैलकुलेशन पावर। आप एग्री करोगे, 15 20 एनालिस्ट को आप बिठा दो और एक सामने कंप्यूटर को बिठा दो, कैलकुलेशन विल बी डन मोर फास्टर बाय कंप्यूटर्स, राइट? सो मोर कैलकुलेशन पावर, frequent insight generation. What do you mean by frequent insight generation? We quickly identifies multiple patterns across the scene. Okay? Active trading strategies captures short-term momentums every 2 weeks. Right? Let's go forward. What is Alpha Insight? Introducing Alpha Insight. आप जैसे सब्सक्राइब करोगे, राइट, डे 1 पे, तो आपको क्या होता है, सी जैसे आप सब्सक्राइब करोगे आपको एआई रिकमेंडेड, मशीन रिकमेंडेड 16 स्टॉक की हमारी तरफ से रेडी बास्केट मिलेगी, राइट? 16 स्टॉक का आपको चूज नहीं करना है, आपको रेडी बास्केट मिलेगी 16 स्टॉक के पोर्टफोलियो की। अब ये 16 स्टॉक का हमने कैसे डिवाइड कर रखा है क्लाइंट के हित के लिए? वी हैव डिवाइडेड इनटू 50% स्टॉक, दैट इज 8 स्टॉक्स इनटू मोमेंटम कैटेगरी, 4 stocks into value category and the remaining 4 stock in the sector category, right? So हमने आपके लिए एक 16 स्टॉक का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट बुके बनाया हुआ है एआई की हेल्प से, which goes like 50% momentum, 25 value and 25% sector. Daily insight generation for new investors. We are taking extra effort. हम extra effort ले रहे हैं हर अपने क्लाइंट के लिए। हम उनको सेम फूड रोज नहीं खिला रहे हैं, राइट? कहने का मतलब क्या है कि अगर क्लाइंट ए, आप अगर आते हो जनवरी 1 को, राइट, तो आपको एक अलग पोर्टफोलियो दिया जाएगा। क्लाइंट बी आता है अगर 5 जनवरी को, तो उसका पोर्टफोलियो अलग उसको मिलेगा। क्लाइंट अगर सी आता है 9 जैन को, उसके लिए अलग पोर्टफोलियो होगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक एक 1 जनवरी को दिलाया वही 5 जनवरी आने वाले क्लाइंट को भी दिलाएंगे, बिकॉज उसमें क्या होता है कि कई स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं, वो आगे चल जाते हैं। तो वी डोंट वांट आवर क्लाइंट टू गेट इन द सेम स्टॉक एट द हायर लेवल्स, राइट? तो इसका और एक एडवांटेज क्या है कि जो 5th और 9th को आएंगे, राइट, वो क्लाइंट के लिए मशीन उस दिन से आइडेंटिफाई करेगा कि उस दिन से लेके नेक्स्ट 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जो इसमें अब फिट होंगे, राइट? सो दैट इज हाउ वी, इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर ऑल द क्लाइंट्स। सो डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, रीबैलेंसेस एवरी 2 वीक्स। हमने जो आपको बताया 50% पोर्टफोलियो 8 स्टॉक्स एवरी 2 वीक रीबैलेंस होंगे। 4 जो वैल्यू के हैं वो एवरी 1 मंथ रीबैलेंस होंगे, और लास्ट के जो 4 सेक्टर वाले स्टॉक है वो एवरी 2 मंथ रीबैलेंस होंगे। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 2 महीने में एक बार पूरा रीबैलेंस हो जाएगा, राइट? अगर उसमें अगर कोई एक आध स्टॉक जो मशीन को अगर अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है एआई मशीन उसको 1 2 स्टॉक को आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर लेगा, राइट? इट्स प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट एआई एंड मशीन फील्स, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी लोग जानते हैं हम इसको कि मार्केट में लास्ट 2 महीने से बहुत ही ब्रूटल करेक्शन आया हुआ है, राइट? बट आप लोग अप्रिशिएट करोगे उसके बावजूद लास्ट 12 मंथ्स के हमारे रिटर्न इज इन द रेंज ऑफ 58% प्लस। आज से अगर हम 2 महीने पहले मिले होते तो हमारे रिटर्न्स वुड हैव बीन अराउंड, आई वुड हैव शोड यू 82%। हम भी 82% मार्केट गिरा है, हम भी गिरेंगे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, सी वी कंपेयर आवर विद निफ्टी 500। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम एआई है, हम मशीन बेस्ड है तो हम ऑलवेज प्रॉफिटेबल होंगे। ऐसा कोई भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, कोई हो ही नहीं सकता है। इक्विटी मार्केट है ना। हम ये सिर्फ ऑनेस्टली बोलना चाह रहे हैं कि वी आर यूजिंग एआई एंड मशीन फॉर हेल्प ऑफ ऑल आवर क्लाइंट्स यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से। एप्पल टू एप्पल मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, अगर मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ तो। अगर हम बता रहे हैं कि हम 58% रिटर्न है, तो हमारे सामने ऊपर नीचे कौन है? वी आर कंपेयरिंग आरसेल्फ विद निफ्टी 500। क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि उसका स्टॉक उसमें यूज किया जा रहा है, बट इसलिए क्योंकि एक पैरामीटर से हम अपने आप को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, राइट? So that is how we compare ourselves with Nifty 500. What we are honestly saying is, this is one of the disciplined portfolio what every client has to get it. अब इसमें इसका बेनिफिट क्या है? हम जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे हमारा स्टॉक भी बढ़ता है। मार्केट जब गिरता है हम कम गिरना चाहते हैं, मार्केट जब बढ़ता है हम ज्यादा बढ़ते हैं, राइट? दैट इज हाउ वी क्रिएट अल्फा ऑफ द निफ्टी 500, राइट? इसी दौरान लास्ट 12 मंथ्स में निफ्टी 500 के रिटर्न इज अराउंड 28.4%, राइट? सो आप क्लियरली अगर देख सकते हो तो हमने निफ्टी 500 से क्लियरली डबल से भी ज्यादा अल्फा बना के दिया हुआ है, राइट? दैट इज द पावर ऑफ एआई, दैट इज द पावर ऑफ मशीन। सो
whenever the markets are rising, हम उससे ज्यादा बढ़ते हैं because stocks कभी भी निफ्टी से ज्यादा बढ़ते हैं, right? And we create the alpha for you as a client, right? So this is one of the very disciplined portfolio what everyone can use for themselves. आगे चलते हैं. This is a graphical presentation of the same view what we have just discussed. Over a period of 1 month, 3 months, 6 months, last 12 months हमारे पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म किया है vis-a-vis the Nifty 500, right? So आप स्क्रीन पे विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं. एवरी क्वार्टर 3 months we have outperformed the Nifty 500, चाहे गिरते समय हो या बढ़ते समय हो, राइट? अगर निफ्टी गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो हम ज्यादा बढ़ेंगे. दैट्स द लॉजिक, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ द अल्फा इनसाइड? ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू. 1 महीने में 2 महीने में कभी किसी को इक्विटी में रिटर्न नहीं बनता है, अनलेस अनटिल आप बहुत लकी हो. तो ओवरऑल आपका होराइजन होना चाहिए 1 ईयर, जिसका आप सब्सक्रिप्शन भी 1 ईयर का ले रहे हो, राइट? रीबैलेंस रेगुलरली. हमने जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, आप अपना डायरेक्ट इक्विटी कर ही रहे हो और कभी भी हमेशा करोगे. ये वाला पोर्शन आपने छोटा सा अमाउंट आपने डेडिकेट किया हुआ मशीन के लिए. सो प्लीज डोंट इंटरफियर इन दैट, लेट द मशीन हैंडल इट. रीबैलेंस से लेके सब कुछ मशीन विल गिव द आइडिया टू यू व्हाट यू नीड टू सेल एंड व्हाट यू नीड टू बाय. वी जस्ट नीड टू फॉलो इट आउट, राइट? एंड थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, रिमेंबर वैल्यू विल गो अप एंड डाउन, राइट? मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलता है, राइट? लास्ट कोविड के बाद 1 साल ऐसे चला था, बट जनरली मार्केट ऐसे चलता है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ऑलवेज हैव ए लॉन्ग टर्म व्यू. रिमेंबर वैल्यू विल गो अप एंड डाउन, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. राइट. सो जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, आपको क्या मिलता है, राइट? सो 16 स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. वी हैव मेड इट वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल द क्लाइंट्स. हम लोग ये पूरे साल का पोर्टफोलियो के चार्ज करते हैं 25,000 प्लस द जीएसटी, राइट? विच कम्स टू 29,500 रुपीज ओनली फॉर फुल 1 ईयर. इसमें आपको क्या मिलता है? महीने में 2 बार, साल में 24 बार आपको हमारी तरफ से रेडी बास्केट मिलती है ऑफ द स्टॉक्स, व्हाट यू नीड टू बाय एंड व्हाट यू नीड टू सेल, right? So this is one of the very powerful thing. In that particular small fee of 29,500 for whole 1 year, you're getting 24 times recommendations from our side, the basket from our side, what you need to buy and sell, right? So this is what we have for you. So just to sum up everything right now, हमने अब तक क्या क्या समझा है? What is our company? Where are we from? हमारी मॉडल्स कैसे वर्क करती है? हमारी मॉडल्स है क्या चीज? अल्फा इनसाइट क्या है? उसका मॉडलिंग कैसे बनाया हुआ है? कैसे ब्रेकअप किया हुआ है? सेक्टर, स्टॉक, मोमेंटम. फिर हमने देखा कि हमारे मॉडल्स को बनाया हुआ कैसे है. हमने ये देखा कि उसकी फीस क्या है, राइट? दिस इज वन ऑफ द वेरी अनदर इंपॉर्टेंट स्लाइड, इस पे आपका ध्यान चाहूंगा. आपने सभी लोगों ने देखा कि इवन आफ्टर द करेक्शन हमारे रिटर्न इज इन द रेंज ऑफ 58%, 59%, राइट? तो हम रिटर्न तो ज्यादा देते ही हैं साल का, बट हम लोग एक और चीज करना चाहते हैं, जो हम ये चाहते हैं कि रिटर्न के साथ में क्लाइंट का सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो, राइट? सो अगर आप लोगों में से किसी ने शार्प रेशियो सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, व्हाट इज शार्प रेशियो? शार्प रेशियो इज अ रेशियो ऑफ ए फाइनेंशियल मार्केट विच काइंड्स ऑफ टेल्स यू कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर एंट्री कर रहे हो तो आपका कितना रिस्क है और उसके सामने आप कितना रिवॉर्ड बना रहे हो, राइट? अगर आपका एक्स रिस्क है और वाई रिवॉर्ड है, और अगर आपका एक्स स्मॉल है वाई बड़ा है, राइट, तो आप वो इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल जा सकते हो. क्यों? क्योंकि आप कम रिस्क ले लो और रिटर्न आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो, राइट? तो दैट इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल गोइंग इनटू इट. So any sharp ratio which is 1 and above is good. जितना high उतना अच्छा, right? So our sharp ratio is always been about 2.5 and above, right? So हमारा sharp ratio is around 2.6, 2.7 near about, which shows हम रिटर्न तो ज्यादा बना ही रहे हैं, बट विद कम रिस्क लेके बना रहे हैं, लो रिस्क. अब वो कैसे कर रहे हैं? इट्स नॉट मैजिक, इट्स प्योर डिसिप्लिन एंड द पावर ऑफ मशीन. उसके ऊपर जाए उसके पहले आपको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट, इसका इमेज ले सकते हो. लास्ट 15 रीबैलेंस हमने जो किया हुआ है उसमें आप देख सकते हो कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 500 से बेटर रिटर्न दिया हुआ है. हो सकता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज टेक ए लॉन्ग टर्म व्यू. वैल्यू विल गो अप एंड डाउन, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं होगा लीनियर वे में. सो इट हैज टू बी चॉपी. बट ओवरऑल हमने लास्ट 15 रीबैलेंस में वी हैव मेड मोर रिटर्न्स ऑन द पॉजिटिव साइड देन द निफ्टी 500 देन द लॉसेस, राइट? So this is how we create significant alpha over the Nifty 500 over a period of 1 year, right? चलिए आगे चलते हैं. So जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, लो रिस्क रख रहे हैं. How are we doing that? Of course the power of AI, of course the power of machine, but उसके अलावा there are also 3 other parameters. One is strong liquidity and volumes. हमारे सारे स्टॉक्स में हाई लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स होती है, राइट? ऐसा एक भी कोई पेनी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपने एंट्री तो कर ली, एग्जिट करना मुश्किल होगी, right? So this is one of the very good advantage. Strong liquidity and volume stocks only. चाहे पहले का देख लीजिए, पास्ट का देख लीजिए या फ्यूचर का देख लीजिए, all our stocks will be high pedigree, good volume stocks. So आप कहीं अटकोगे नहीं, आप कहीं फंसोगे नहीं.
सेकंड इज एटलीस्ट 1000 से 7,500 करोड़ का मार्केट कैप हमारी स्टॉक्स का होना ही चाहिए। हम सेक्टर एग्नोस्टिक है, हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब में पार्टिसिपेट करते हैं, बट मार्केट कैप होना जरूरी है, वॉल्यूम होनी जरूरी है, राइट। नंबर 3, एटलीस्ट 3 to 5 मार्केट एनालिस्ट शुड बी कवरिंग आवर स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि यार कोई अलग ही स्टॉक मालूम पड़ गया जिसका मार्केट कैप ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है, हम लोग रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। बिकॉज क्लाइंट का मनी इन्वॉल्व है, वी वांट टू बी वेरी श्योर एंड वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट। So this is what we wanted to convey you. Thank you for your patience hearing. I'll be more than happy to take any questions from you on the chat box, or you can unmute yourself and ask me. Thank you so much. अनम्यूट हो सकते हो आप, अपना इसमें आ सकते हो। यस जयमिन भाई, इनफैक्ट वी आर वर्किंग ऑन इट। आपका मेल हमारे बैकएंड टीम में, यू शुड गेट एन रिप्लाई ऑन मंडे इटसेल्फ अबाउट ऑल द क्वेरीज यू हैव रेज्ड। There's a question, minimum investment. Okay, so minimum investment what we are suggesting is like 10 lakh rupees and above. उसका रीजन क्या है कि 10 लाख इज द ऑप्टिमम वैल्यू। आप 25,000 प्लस जीएसटी दे रहे हो, इट कम्स टू लाइक 2.5-3%। हम लोग सभी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, वी डोंट चार्ज बेसिस ऑन द एयूएम, वी चार्ज बेसिस प्योरली ऑन द फिक्स फी। सो चाहे आप 10 लाख रुपया डालो, आप 5 लाख डालो या 10 करोड़ रुपया डालो, हमारी चार्जेस फिक्स है विच इज 29,500। सो वी सजेस्ट यू कैन पुट मैक्सिमम मनी सो दैट यू गेन बेस्ट, राइट। इट्स ए वेरी फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो ऑल्सो। अब मैं आपको और एक चीज इसमें बताना चाहूंगा जब तक कि आपके और कोई क्वेश्चन आए। सो अगर मैं इसका पूरा इस पूरी मॉडल का, इस पूरा इन्वेस्टमेंट का अगर मैं आपको निचोड़ निकाल के दूं ना, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, द जिस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज व्हाट फॉर यू एज ए क्लाइंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस एंड व्हाट यू आर गेटिंग इन दिस पोर्टफोलियो इज number one, high returns, right? We our gross returns are quite high. Second is we with low risk, right? हम लोग low risk ले रहे हैं because जैसे मैंने आपको शार्प रेशियो बताया, जैसे मैंने आपको अपनी मॉडल्स बताई, जैसे मैंने आपको बताया हाई लिक्विड एंड हाई वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। सो लो रिस्क, हाई रिटर्न्स, low risk. Number 3 is very flexible portfolio for you as a client. So very flexible, why it is very flexible? अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या कोई और चीज में इन्वेस्ट करो, राइट, आप 1 साल के पहले अगर विड्रॉ करते हो तो आपको 1% का पेनल्टी है। हमारे पोर्टफोलियो में इट्स एब्सोल्युटली नो पेनल्टी। आपका पोर्टफोलियो आपके खुद के पीएल के अकाउंट में ट्रेड हो रहा है, राइट, यू हैव द टोटल कंट्रोल ओवर इट, तो वो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी। दूसरा, आप चाहो तो कभी भी, अगर समझो 10 लाख से चालू करते हो, आपका रिटर्न अच्छा बन गया, यू आर हैप्पी, आपके पास कुछ पैसे आ गए, चाहे सैलरी से या बोनस से या बिजनेस से, आप उसको टॉप अप कर सकते हो, राइट, विदाउट पेइंग एनी अदर चार्ज। सो आप टॉप अप कर सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, पॉज ले सकते हो। अदर वे अराउंड, आपने 40 लाख रुपए डाल दिया, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो। इट्स फ्लेक्सिबल विद द वर्ड गो, राइट, नो चार्जेस एक्स्ट्रा, नथिंग एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू से, दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो फॉर यू। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, अपने आप अगर आप अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में बिजी भी हो, आपको इसमें डेली कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट ए रिकमेंडेड एआई रिकमेंडेड बास्केट फ्रॉम आवर साइड एवरी 15 days। रिसर्च हम देंगे, डीलर पीएल का डीलर हेड ऑफिस बॉम्बे से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। सो इसमें आपका मिनिमल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, राइट। सो यू कैन एंजॉय द बास्केट्स, यू कैन एंजॉय द एआई पावर and get the maximum benefit out of it. That is why I called this particular product at the start of the thing. This is one of our hero products. With the discipline and with the, over a horizon of 1 year, आपका रिटर्न बिल्कुल अच्छा बनना चाहिए, right? Any other questions you can see on the chat box, Vikas? Yeah, there is a question. If you see the chat box, 1 second. Yeah. Does small baskets like Equity Rocket and others work like the same technique? Have you answered this question? No. So yes, of course, we also have another 3 baskets which have a minimum investment requirement of 2 lakh and above. तो वो तीनों बास्केट भी हमारी है, इन्वेस्टर एआई की, जो पीएल के ऐप पे, पीएल की वेबसाइट पे आप बिल्कुल जाके आप देख सकते हो। उसमें आपको डीलर सपोर्ट नहीं है फिलहाल के लिए, बट वो भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें भी आपको डीलर सपोर्ट जल्दी मिल जाएगा। एज ऑफ नाउ इट्स ए डीआईवाई प्लेटफॉर्म। आप पीएल के अपने ऐप पे या पीएल के वेबसाइट पे जाके उसको आप देख सकते हो।
those three baskets are like Equity Rocket, Sector Rockstar and Hidden Gems. तो ये 3 बास्केट भी हमारी है बेस्ड ऑन द मोमेंटम, वैल्यू एंड सेक्टर. आप तीनों का इंडिविजुअली अलग-अलग बेसिस पे अगर आपको वो सूट होता है तो आप ले सकते हैं. चार्जेस उसमें थोड़े कम है. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 2 लाख एंड अबव है. Thank you so much. Okay, how will the portfolio be churned? सुनील दलानी जी पूछ रहे हैं. ओके, सो सुनील जी, आपका जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा मोमेंटम पोर्टफोलियो एवरी 15 डेज चर्न होता है. बिकॉज़ ही उसका रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि मोमेंटम को पकड़ना. अगर मोमेंटम पकड़ेंगे तभी अल्फा बन पाएगा, राइट? अगर आपको नॉर्मल रिटर्न चाहिए तो आप फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड भी आपको 15-20% रिटर्न दे ही देते. Idea is to create alpha over the Nifty 500. So participating 50% of our money into momentum. How we carry is like best stocks are picked by the machine. What machine feels in the next 8 to 10 days या 8 to 14 days जो momentum best market में जिसमें है उसको हम catch कर सकते हैं. So that is the reason we rebalance every 14 days only about the momentum portfolio. So momentum portfolio rebalances every 14 days. Sector value is rebalanced for 1 month and sector 2 months. So overall portfolio 2 महीने में पूरा rebalance होगा. Right? So 15 दिन से लेके 1 month and 2 month. That is a churning frequency. I think Amit, thank you so much for your session. If there are any more questions, we'll pass them back to you. Looking for a lot of investments in this product. Friends, Sure. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें AI आपके लिए चर्निंग करेगा, आपको कुछ नहीं करना है. रिटर्न्स मशीन देगा, मार्केट की वॉलेटिलिटी AI पकड़ता है और ह्यूमन एलिमेंट इसमें जरा भी नहीं है. 3000 से ज़्यादा स्कैनर्स अलग अलग मूवमेंट्स को कैप्चर करके आपको बेस्ट पॉसिबल स्टॉक बताते हैं और अलग अलग टाइम फ्रीक्वेंसी से स्टॉक ऑटोमेटिकली रिबैलेंस भी होते हैं. हमने ये रिटर्न्स 90% भी इससे देखा है और अभी मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से कुछ 70% रिटर्न के रेंज में अभी तक रिटर्न आया है, विच अगेन इज अ वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू average returns generated by the benchmarks and also the portfolio returns of the customers on an average. Amit is available for any other detailed one-on-one sessions also. Amit Holani from Bridgeweave. हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आ जाते हैं और सैटरडेज को भी आते हैं, जैसे हमने हमेशा देखा है. बहुत डिलीजेंटली हमें सपोर्ट कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसे क्लाइंट्स हैं आपके पास जो 2-2 लाख रुपया 10-10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे क्लाइंटों का आपको सेशन अमित होलानी के साथ में कराना है और है वो आपको इन्वेस्टमेंट कराने में हेल्प भी करा देगी. तो थैंक यू अमित फॉर द सेशन. My pleasure, Vikas. And all the best to everyone. I hope everyone will take the benefit and the use of it. Thank you for your patience hearing. Thank you, Vikas. Yeah. Okay. So I just like to share my screen. 1 second. Okay. I'm not able to share my screen. Paresh, is there possibility that you can share the Please try. मेरा वो प्रभुदास का प्रेजेंटेशन कैन यू शेयर, मैं तेरे को भेजूं? हाँ भेजो ना सर. ओके 1 सेकंड. किसी को कुछ सवाल है तो क्वेश्चंस आंसर सेशन. परेश मैंने तेरे को भेजा है मेरा प्रेजेंटेशन, इफ यू कैन जस्ट प्ले इट फॉर मी क्विकली. किसी को भी कोई सवाल है वो पूछ सकता है अभी चैट सेशन में. परेश मैं देखो व्हाट्सएप किया है मेरा प्रेजेंटेशन.
यहाँ पे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो कितने लोग हो जो ऑलरेडी एसोसिएटेड है प्रभुदास से और कितने लोग हैं जो प्रभुदास से एसोसिएटेड Yes, नहीं sir. है। it will. चैट मैसेज पे डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हार्दिक जी ने बोला है ऑलरेडी अ क्लाइंट। ओके, देखिए सर, मेरा ये प्रेजेंटेशन इज टू इंट्रोड्यूस यू प्रभुदास लीलाधर इन अ लिटिल डिटेल्ड मैनर। वी आर अ ब्रोकर who has started in 1944। हम लोग 80 हैं and we are broker of Bombay Stock Exchange। In these last 80 years, markets have gone through a lot of booms and busts, and we have been able to survive and prosper nationally as well as internationally. Right from the Harshad Mehta scam to crude oil closing negative or even the commodity scam, we have had a very, very good track record and the trust with our clients and our partners all these years. Ji, thank you for saying that you are with us. So this present used to you understanding what is Prabhudas Liladhar better. Next slide, Paresh. Paresh, next slide, kar. Next slide. Yeah, we recently 80 years, which was we are very proud to tell you that Piyush Goyal ji, the Union Minister of the Central Government, came and graced our session. Amisha Vora is seen in this slide. She is our chairperson of the company. She is also a chartered accountant. Next slide. Like I told you, we are a national level broker. We are not a regional broker. So we have across India more than 200 cities. We have our presence, and we have more than 1,60,000 active clients. We also have a very large NRI desk, and we also have a FPI and an institutional desk. Next slide. Our business is divided. So basically, we do everything that finance touches. But if you were to differentiate what exactly we do, so we do broking. In that, our stock markets, commodity markets come. Distribution, mutual funds, insurance, PMS, loans, IPOs, corporate FDs, bonds. In all that, MLD, structured product, in all that distribution comes. Advisory products also comes. We have got an institutional desk. We have more than 25 analysts who are covering more than 200 stocks in a detailed manner, and we have more than 300 plus institutions empaneled with us. We have a very, very strong investment banking team. Currently, we are raising. Paresh, go back to the previous slide. Previous slide, pe ja, हाँ. Currently, we are raising. We have done more than 1,000 crores of fundraise for 11 companies last year. Today, we are raising a very interesting company. We are raising funds for a company called Lordsmark, where we are, giving a. We are raising it, and we expect the listing to happen by March, April. It's a very exciting deal. So for people who are interested in investment banking related deals, you should definitely contact us. We are also into wealth management, asset management. We have our own PMS license. We have our PMS called Aqua. That is a totally quant-based PMS. And we have security financing, means we do loan against shares and margin trading funding also. So this is the business that we are into. Next slide. Over the years, we have been recognized as a research-backed organization, and we have won multiple awards. We have got the Best Brand Award from Economic Times, ET Money, for 3 years in a row. So it talks about our hard work and the quality of our team. Next slide. So she is our chairman promoter, Amisha Vora. She is also on the board of APMI, that is the board which is promoting the association for PMS and AIFs. PMS and AIFs, that is alternative investment funds, is the upcoming asset class where we are seeing a phenomenal growth happening
in for spreading and developing that particular segment, Amisha is one of the important key board members in this particular group. As you can see, Association of Portfolio Managers of India. Next slide. So this is another way of showing what we do. We are also into international markets. If you want to invest in US markets, you can do that. Insurance, FDs, lendings, stock lending, borrowing, unlisted shares, very, very big business now, unlisted shares. We are doing unlisted shares to a great extent. Paresh will tell you. He himself is doing many transactions in that. So all these are opportunities for you to create wealth for your client and also build a good business for yourself. Next slide, Paresh. Mostly our main claim to being in existence is how we are servicing and researching for our clients. So we have got all types of research products for all types of clients. Freshers, directional based traders, or do it yourself clients who want to trade through our mobile app or our digital platforms. Paresh, next slide. Next slide. Yeah. So the research is of these types. All the research that I spoke about, we are giving research primarily on these types of research like fundamental, technical, derivative. You heard Vikram for advisory. We also are giving our research on Telegram channel. So you can see our Telegram handle PL India Online, PL Derivative channel. They are very active channels where we are posting our research. We are also very active on YouTube where we are posting important content which can be important for you for lead generation also. Instagram also we are posting, we are very active on Instagram also. So if you follow these two channels, you will be able to create a lot of marketing content which you can use to create clients or also cross sell to your existing clients. Next slide. I think Vikram has covered all of this, so I'll go to the next slide. Yeah, next slide. So these are the things that we are using for technology purpose. We have got a mobile app which you can use even on Apple phone, even on Android phone. It is called PL DigiTrade. Account opening is on online, Insta KYC, which works only on Android phones. We have DigiMF Fund. We issue a quarterly magazine called Partner Connect, where we update our partners on important actions that is happening in the partner space. We have our own system where we are generating capital gain loss reports as per income tax format, portfolio tracker. Here we also have a analyze portfolio option where you can, through our system, create an advisory report on your existing client's portfolio and talk to your customers. And we also show you what is the unlisted shareholding of that particular client, if any, in the portfolio tracker. We have got a risk management software called Rakshak, which you can have in your office free of cost, which will tell you what is your live margin utilization against open positions in the market. We have a chatbot called Leela, which you can use or even the client can use for any queries 24/7. Like I told you, we are active on all these social media platforms, Telegram, YouTube, and Instagram. Next slide, Pradesh. We have tied up with SEBI advisors. So one of them was Bridgeview, which you have seen. We have also got other advisor tie-ups like Alpha Niti, Value Stocks. These are SEBI advisors which are creating a basket of stocks and holding them for multi-bagger returns. If I were to talk of Alpha Niti, there is a basket called Make in India, which has delivered more than 300% with a 60% plus CAGR, where he has created a portfolio of only 10 stocks, which will grow if the Make in India story grows. Very, very famous portfolio. And the investment ticket size is only 2.5 lakh rupees, which is to be kept in your ledger account. So like that, we are offering these kinds of supports also, services also.
Next slide. This was the do-it-yourself product which Amit mentioned, where you can have these baskets, do-it-yourself baskets of 2 lakh rupees. Next slide. We also are into API sharing. So if you have you have your algo strategy and you want to link it to our back office systems, then we can link it. We can give you an API bridge through Robotech, and you can do it with us. We also have a special screener called Trade Clue, which gives you technicals as well as option analytics, where you can trade intraday using our screen. Next slide. The servicing of the subbroker channel happens this way. Like you are a subbroker, you will be serviced by an account manager or a relationship manager. He is supported by a service person and a dealer. All these people report to me, that I am the chief business officer, and I report to the CEO director, and we report to the promoter. Now, the other teams that work concurrently for your support are so many teams also. The distribution team, the admin team, the account opening team, the IT team, the research team, the funding team, the risk management team. So there are a lot of teams. It's a total teamwork exercise. But for you, the point of contact remains your relationship manager or his superior reporting authority. So there is a very flattish structure in servicing you, at the same time giving you the benefit of all the teams. Next slide. Our partner support is divided in these areas primarily. Marketing support may we are also helping you with digital creative signboards, newsletters, standees, banners. We also do events and meetings. Like this meeting is online, but we can do also offline meetings. Terminal wise, we are giving Odin platform, which is web based. It can be EXE based and it can be diet based also. And for business development purpose, we have account opening referral link, which you can give and open accounts on a mass basis. And also we have a dedicated customer support desk with a lot of research power packed to it. Yeah. So with this, I end my presentation. Parag, just go to the next slide. Uh, yeah. No. Next slide. Next slide. Yeah. So all. Yeah. So there is now only one model left, which is authorized person. Okay. If there are any questions, I can take them. In case you feel like asking us any questions after this, you may write to us with Paresh. We would love to get back to you. Thank you so much, everyone, for joining us. Paresh? Hello. Yeah. Yeah. Yes, sir. Well, thank you, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank And you. Thank you. goodbye.